Hello friends, today we are continuing the present simple tense, that is we are taking the irregular verbs first form, second form and third form. In that yesterday we have taken the same thing, today also we are taking the different forms of verb. Ask, पूछना, विचारने, अडगडम. आस्क्ड हिंदी में पूछा, मराठी में विचारला, तेलुगुलो अडगाडू. थर्ड फॉर्म आस्क्ड पूछ चुका, विचारलेला, अडगेशाडू. ब्रिक, ब्रोक, ब्रोकन. कैच, कॉट, caught. Drive, drove, driven. In that forms of verb, on the if you take the only the first form, on that you make the so many questions, that to the simple present tense. It is important as far as your competitive examinations as well as daily life is concerned. Now in that we want to take here what are the WH questions and their answers. We are taking మనము WH క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటిది, వాళ్ళ ఆన్సర్స్ ఏంటిది మనం తీసుకుంటున్నాము. తీసుకోండి. ఫస్ట్ మనము ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఫస్ట్ डू यू आस्क क्वेश्चंस. तुम क्वेश्चन पूछते क्या, पूछते तो यस वी आस्क क्वेश्चंस, नहीं है तो नो वी डू नॉट आस्क क्वेश्चंस. डू यू ईट राइस, यस वी ईट राइस, नो वी डू नॉट ईट राइस. डू यू ड्रिंक वाटर, यस आई ड्रिंक वाटर, नो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर. We are asking the second person and answer should be first person singular or first person plural. Now take the second one. Do को अब where बतलाना, where से अपन क्वेश्चन WH क्वेश्चन किस तरह से करना, WH क्वेश्चन ఎలా చేయాలి, अपन WH क्वेश्चन कसं करू शकता. Where do you ask questions. तुम क्वेश्चन कहाँ पूछते, మీరు క్వశ్చన్ ఎక్కడ అడుగుతారు. We ask questions in house, we ask questions on road, we ask questions in front of teacher. Where do you eat rice, we eat rice in house. Where do you catch ball, we catch ball in ground, नहीं तो I catch ball in ground. Where do you drive car, I drive car on road, I drive car in front of my father. You can say like this also. Second one ఏంటిది, వాట్. వాట్ बोले तो क्या, वाट बोले तो क्या ఏంటిది. वाट डू यू आस्क इन फ्रंट ऑफ स्टुडंट्स, तुम स्टुडंट के सामने क्या पूछते, तुम्ही విద్యార్థ్యాసమోर काय విచాरता, మీరు విద్యార్థుల ముంగట ఏం అడుగుతారు. వి ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. వాట్ డూ యూ ఈట్, beside mother, I eat rice beside mother. What do you catch in ground, I catch football in ground. What do you drive, I drive car. Like this you make the question and answers. Now friends, what we are taking next one, who. who बोले तो क्या यहाँ पर कौन. यहाँ पर who किसके लिए इस्तेमाल करना, clarify it. I am giving the clarification of the who. Who is used only the people. इंसानों के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं, मनुष्यासाठीच, जिवंत असलेसाठीच, माणसासाठीच whoचा उपयोग करतात आणि पशु पक्ष्यांसाठी उपयोग करत नाहीत, वस्तूसाठी उपयोग करत नाहीत. We cannot use for the things. Who ask question on road, रोड के ऊपर क्वेश्चन कौन पूछे, आई आस्क क्वेश्चन ऑन रोड. हु कैच बॉल इन द ग्राउंड, वी कैच बॉल इन द ग्राउंड. हु ड्रिंक वाटर इन फ्रंट ऑफ हाउस, आई ड्रिंक वाटर इन फ्रंट ऑफ हाउस. वी ड्रिंक वाटर इन फ्रंट ऑफ हाउस. Like this you make the questions. Friends, what I am telling is that you make the many question answers. If you know the forms of verb, first form, second form, third form, you by heart the forms of 100 forms of verb, irregular verbs.
You can speak anywhere. You make the thousands of sentences. I have told so many times. Now also I am telling. आता मी सांगत आहे की तुम्ही फॉर्म्स ऑफ वर बाय हार्ट करा. फर्स्ट फॉर्मवरच तुम्ही थाउजंड्स ऑफ हजारो सेंटेन्स बनवू शकता. ते तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये उपयोग पडते. नेक्स्ट कम टू द व्हेन. कहाँ, कब, केव्हा. व्हेन डू यू आस्क क्वेश्चंस आउटसाइड क्लास. अरे भाई तो आउटसाइड क्लास हो जाने के बाद बाहर कब पूछता. आई आस्क क्वेश्चंस आउटसाइड क्लास एट 6 o'clock. मैं 6 बजे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या है उसमें. अभी पूछना बोल के जरूरी आहे का. आत्ता विचारावं म्हणून काय जरुरी आहे का. मी 6 वाजता विचारतो, 7 वाजता विचारतो, 8 वाजता विचारतो. व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर. तुम पानी कब पीते. आई ड्रिंक वाटर एट 1 o'clock. When do you catch ball? I catch ball at 6 o'clock. When do you go to home? I go to home just now. When do you go to class? I go to class now and then. When do you attend the class? I attend class now and then. We attend class now and then. Like this also you make the question answers. Now come to the which. విచ్ ఏ జో హై విచ్, ఇది విచ్ వస్తువుల కోసం మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. क्लॅरिफिकेशन. विच ये वस्तूसाठीच, ईटसारखं वस्तूसाठीच उपयोग करतात. माणसासाठी, इंसानों के लिए विच का इस्तेमाल उपयोग कभी भी नहीं करते. मेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट आई एम टेलिंग. विच क्वेश्चंस डू यू आस्क बिहाइंड हेडमास्टर. हेडमास्टर के पीछे कोणसा क्वेश्चन पूछते तुम. एक क्वेश्चन अडगोदर कोणसा क्वेश्चन पूछते. वी आस्क इंग्लिश क्वेश्चंस बिहाइंड हेडमास्टर. हेडमास्टर के पीछे इंग्लिश क्वेश्चन पूछते. विच बॉल डू यू कैच इन ग्राउंड. आई कैच कॉर्क बॉल इन ग्राउंड. विच वाटर डू यू ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ स्कूल. I drink filter water in front of school. When do you cough on road. Sorry. Which car do you drive. I drive Indica car. Like this you make many sentences, not 20-25. You make the many sentences as you like. Many sentences. Next come whom. किसको, ఎవరికి, कोणाला. कोणाला. ये फक्त कोणाला कसं वापरतात. మానసాసాఠీస్ వాపడతారు. ఇన్సానోं के लिए इस्तेमाल करते. ఇది మనుషుల కోసం మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఏ ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇది ఉపయోగించరు. ఓన్లీ पीपल కోసమే, ఓన్లీ इंसान के लिए माणसासाठीच whomचा उपयोग करतात. कसं. whom do you ask questions. तुम क्वेश्चन किसको पूछते. तुम क्वेश्चन कोणाला विचारता. आप మీరు క్వశ్చను ప్రశ్నలు ఎవరికి అడుగుతారు. whom do you ask questions. beside class teacher. beside टीचर के बाजू में तुम क्वेश्चन किसको पूछते. we ask questions to students beside class teacher. whom do you ask money on ground. I ask money my friend on ground. Whom do you teach English. I teach English to my student. Whom do you tell story. I tell story my father as well as mother. Like this also you make the question answers friends. You make the many questions. You whatever the I am giving the first form, second form, third form, you by heart those one. Then it is possible to speak English and write the competitive exams. Now come to the 8th question. whose. किसको. ये whose किसको इस्तेमाल करना. whose ये people జనాల కోసం మరియు వస్తువుల కోసం ఉపయోగిస్తారు. ये लोकांसाठी आणि वस्तूसाठी याचा उपयोग करतात. ఇది ये लोगों को वास्ते और वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल करते.
हुज क्वेश्चंस डू यू आस्क स्टूडेंट, बोल तो अपने को टीचर एक 10-12 क्वेश्चंस दिए समझो, हुज क्वेश्चंस, हेडमास्टर के क्वेश्चन की, एक साइंस टीचर के क्वेश्चन की, हुज क्वेश्चंस डू यू आस्क स्टूडेंट, वी आस्क आवर क्लास टीचर्स, टीचर के apostrophe है फ्रेंड्स, इट इज ए apostrophe, वी आस्क आवर क्लास टीचर्स क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स, हुज मनी डू यू गिव मी, I give our mother's money to you. Whose uncle do you meet on road? We meet your uncle on road. Like this, you make the question answers. You write down many question answers here also. At least 50 question answers. Now, how, yela, kasa, किस, कैसे, कैसा, कैसी. हाउ डू यू आस्क क्वेश्चंस, तुम क्वेश्चन कैसा पूछते, बोलो कैसा पूछते, कलेक्टर के जैसा पूछते कि टीचर के जैसा पूछते कि अटेंडर के जैसा पूछते, ఎలా అడుగుతావు నువ్వు क्वेश्चंस. हाउ डू यू आस्क, आई आस्क क्वेश्चंस लाइक कलेक्टर, मैं कलेक्टर के जैसा क्वेश्चन पूछता हूँ. आई आस्क क्वेश्चंस लाइक इंस्पेक्टर, आई आस्क क्वेश्चंस लाइक मिनिस्टर. हाउ डू यू आस्क क्वेश्चंस, I ask questions like CM, inspection CM आए तो. How do you ask money, how I ask money like prime minister. How do you eat rice, I eat rice like a child. How do you drink water, I drink water like a beggar, मैं beggar के जैसा पानी पीता हूँ. How do you go to house, I go to house like a small child. Like this you make the question answers, many question answer, 50 question answers. अब लास्ट, वाई डू यू आस्क क्वेश्चंस, तुम क्वेश्चन क्यों पूछते, क्यों पूछते जी, ఎందుకు అడుగుతావు నువ్వు క్వశ్చన్ నాకు, तुम्ही मला का विचारता असं जर कोणी म्हणलं. वाय डू यू आस्क क्वेश्चन्स, आय आस्क क्वेश्चन्स बिकॉज आय एम सब्जेक्ट टीचर. वाय डू यू आस्क क्वेश्चन्स, आय आस्क क्वेश्चन्स बिकॉज आय एम हेडमास्टर. वाय डू यू आस्क मनी, आय आस्क मनी बिकॉज आय एम लेंडर. Why do you ask questions? I ask question like MEO. I ask question like DEO. We ask questions like president. Authentic persons. Why do you ask questions? I ask questions like authentic person. Means जिसको अधिकार है उस तरह से मैं क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ. So friends, we have completed WH questions. You make, it is a very important, it is a very important in the day to day life. You make the question answers like this. Now friends, subscribe my channel, like it and share with your friends. Thank you.